Viewers, amid the toxic air emergency that Delhiites are going through, the Supreme Court has wrapped the Delhi government for its much-debated odd-even scheme, calling it mere optics. In fact, optics are also being played out between political parties, with each blaming the other for this air crisis. But here's what the Supreme Court said today, in some rather stinging observations. The court said that the odd-even scheme has no substantial impact on ground. Delhi, remember, is gearing up for the fourth implementation of the odd-even scheme from the 13th till the 20th of November. But before we talk about the present, it's also essential to look at the past. And may I say, a long, deep look into the past. The odd-even scheme was introduced first back in January 2016. Exemptions included emergency and police vehicles, two-wheelers, women-driven cars, cars with women and children, etc. So in short, the odd-even scheme only applied to private four-wheelers driven by men. What about the results? Odd-even 1.0, or the first version of the scheme when it was implemented, witnessed a mere 2 to 3% reduction in air pollution as per an IIT Delhi research. Cut to odd and even scheme 2.0, which was implemented from 16th of April to the 30th of April in 2016, with the same exemptions as in January of the same year. But there was no reduction in pollution as reported by the Energy Policy Institute at the University of Chicago. As per India's pen, the pollution levels only increased. The PM 2.5 levels increased by 23% and the PM10 levels by 22% compared to the previous fortnight. Talking about the third version of it, the odd and even scheme 3.0 was implemented from November 4th till the November 15th in 2019 with a steeper fine for violators. This time, two-wheelers, electric vehicles, medical emergency vehicles, school transport, VIP vehicles, women-only vehicles, and differently abled passengers were exempted. The results, once again, were not very encouraging. Delhi Technological University said in its study that the level of particulate matter had reduced only by 4.7 to 5.7%. A study conducted by the Council on Energy, Environment and Water concluded that this latest iteration did not provide any substantial benefit either. So on Beyond the Headline, here's what we ask. How impactful is the odd-even scheme? To talk more on this, I'm joined by Basuri Swaraj of the BJP, Zishan Haider, political analyst, Gufran Beig, founder and project director, Safar, and Sanjay Upadhyay, Supreme Court advocate, also joins us. Thank you to all of you. Namaskar. At the outset, let me first say that as I talk to you, I am suffering from a sore throat. I have a runny nose and my eyes are watery when I wake up in the morning. And I'm sharing this with you because it's not just me. I'm sure you'll agree that there are a lot of Delhiites who go through this problem every year, this time around, when we see this air emergency. Gufran Beig, now with the odd and even scheme being planned to be implemented once again, will it help people like me? Certainly not. It is a simple arithmetic. If there is no intrusion from outside, only local, 40% comes from the transport sector. Out of that 40%, that four-wheeler car contributes only 8%. So you are dealing with 8%. Out of them, if it is odd even, there is 50% are there. So you are maximum targeting without any exemption 4%. And that is what you can see. And 4% is nothing. In fact, if the weather changes here and there, although odd even if you put it, it will not increase the pollution, which one of the studies have shown. It has increased because weather become very hostile. So that is that reflection. It can reflect in other way around also. So in general, this is only helpful in the Western countries where almost 100% of the vehicles on the roads are four-wheelers. So this is basically a Western methodology where there were successes. In Indian atmosphere,
in Indian conditions where you have a different kind of a vehicles, it's not going to yield much, which you can see with the normal statistics. ओके जीशान हैदर, आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे, ऑड इवन स्कीम पे क्या बोला है, क्या कंडीशंस रखने चाहिए, वो सब एनालाइज करके दे विल सी वेदर इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. बट प्लान ये है अभी तक कि 13 to 20 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी. हमने गुरफान साहब को भी सुना बोलते हुए, हमने ओवर द इयर्स रिजल्ट भी देखे हैं ऑड इवन स्कीम के कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. 2 to 4% आपका थोड़ा बहुत इधर उधर एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, बट कोई सब्सटैंशियल फर्क नहीं पड़ता है. जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देखिए, मतलब जो है गोपाल राय जी ने कहा है कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे और बात करके बहुत जल्दी इस पे एक्शन लिया जाएगा. कम से कम चीजें हो रही हैं और होने के साथ साथ इसमें किसी भी तरह का कोई बहाना तो नहीं हो रहा है. जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश आएगा उसको न मानने के बजाय कानून बन जाएगा फौरन. ये तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको सराखों पर उसके आदेश को लेते हुए काम शुरू हो गया है बिल्कुल, और लगातार चल रहा है. तो मैं यही कहूंगा कि मतलब ये बहुत जरूरी चीज है कि जैसा कि आम आदमी पार्टी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो उसका फौरन संज्ञान लिया और काम शुरू हो गया. तो अभी कुछ दिन दीजिए, 2-4 दिन में सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी. और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉग है, ये खाली स्मोक नहीं है, ना ही फॉग है, दोनों चीजें मिलके हैं. आमतौर पर जब मौसम ठंडा होने लगता है तो जो फॉग आने लगती है, जो ऊपर से मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ड्यू आने लगता है, वो सारे पॉल्यूशन को नीचे ही रखता है. तो ये इन दिनों में प्रॉब्लम बढ़ती भी है और हमेशा आप दिल्ली का इतिहास उठा कर देख लें, होता ही है. लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इसमें कुछ हो नहीं सकता या इसमें कोई पॉलिटिकल मैं एजेंडा इसमें ला के ये कहूँ कि नहीं ये तो इस वजह से है. जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ये जिम्मेदारी ली हुई है क्योंकि उसकी सरकार है और वो पराली जलाने में भी पंजाब में पूरी कोशिश कर रहे हैं और खास तौर से दिल्ली की पॉल्यूशन को कम करने. लेकिन मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन स्वराज साहिबा से पूछना चाहूंगा कि कुछ काम मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो करे इसमें मिलकर, जिससे मतलब जो है कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ आइडियाज के विचारों के साथ आना चाहिए जो मिल के बैठ के दोनों गवर्नमेंट को साथ में, खाली एक दिल्ली की सरकार नहीं है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी मौजूद है. इन्हें चाहिए कि बैठ के डिस्कस करें. और दिल्ली का पॉल्यूशन क्योंकि सांस लेने में परेशानी बाकी जी को भी हो रही होगी और दिक्कत सबको आ रही होगी, तो ये सबकी प्रॉब्लम है, इसको सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए. To respond to that, of course, this blame game has been going on between your party and Aam Aadmi Party, but you want to respond to what Zishan Haider said? It's not about a blame game. It's about the Aam Aadmi Party government shirking its responsibility. See, pollution in Delhi is not just a winter phenomenon. It's actually a year-long phenomenon. Now, I respectfully disagree with Zishan Ji on a couple of issues. First of all, today even the Supreme Court said that the odd and even scheme of combating pollution is nothing but optics. The BJP has always said that this is nothing but a gimmick. In fact, in 2019, the National Green Tribunal even observed that this scheme, you are only encouraging people to buy more vehicles and allowing more interstate traffic. So therefore, the odd and even scheme is completely inefficient and ineffective, is something that the NGT has recognized, the Supreme Court recognizes that, and all the data that your channel also presented at the beginning of the debate is also reflective of that. In fact, Shreya, today on 7th of November 2023, there's a report by the Indian Express based on satellite imaging, and it's appalling. Would you believe that in Punjab, the share of total farm fires today is 65% and Haryana is only 5%? See, it's a known fact that major contributor of pollution in Delhi is parali burning or stubble burning, which contributes to about 53% of the entire pollution. This is something that your channel has also reported. Now, in 2020, in November 2020, the Aam Aadmi Party
was very vocal, saying that they have all the data and they are going to contribute, they are going to make sure that they are going to take steps to deal with stubble burning. But having said that, in October 2023, they did an absolute U-turn and said that they don't have any scientific data and therefore they are unable to formulate any policy. Now, for the last 4 days, when Delhi has turned into a toxic chamber, all that we see the Aam Aadmi Party doing is politicizing the issue and blaming the center. Let me answer that on what has the center already done. On the 30th of October, there was a press release by the PIB. 3,333 crore rupees have already been allocated by the central government to the governments of Punjab, Haryana, NCR states as well as Delhi just to deal with Parali. Now look at the other thing. There have already been peripheral expressways. Now, whether it is the Eastern Expressway or the Western Peripheral Expressway, both have been constructed and inaugurated by the central government to ensure that unnecessary heavy vehicular traffic does not even enter Delhi. Now, the Delhi government is the one that is responsible for ensuring that municipal waste is not burnt in the open. The Delhi government is responsible for the smog tower, which is nothing but a testament to their corruption. It is lying absolutely closed and defunct in CP. In fact, today the Supreme Court even told them, in fact, I'm reading from page 8 of the Supreme Court order. It says, it is stated that the smog tower, which has been instituted in pursuance to the directions issued earlier, albeit on experimental basis, is not working. On our query, the answer is some disciplinary action is proposed against an officer who is chairman of DPCC. This is ludicrous. We want the tower to be working. As to against which officer they need to do and what they need to do is their business. Now, the Supreme Court is also saying that the smog tower is Zishan Haider, what Basuri is saying is a fair point कि political blame game खेलने के बजाय अगर आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी निभाए आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी. ऑड इवन स्कीम की आपने बात की ज़ीशान हैदर, इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि इतने सारे एग्जेम्पशंस हैं that the implementation itself becomes a challenge. टू व्हीलर्स एग्जेम्प्टेड है. टू व्हीलर्स दिल्ली में इन द कंट्री हाईएस्ट है. मोर देन 1.18 करोड़ टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड हैं. उसमें आपने उनको एग्जेम्पशन दे रखी है. देयर आर अदर एग्जेम्पशंस ऑल्सो. जब तक गाड़ियां कम नहीं होंगी रोड से तब तक वेहिकुलर एमिशन और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम जो है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू पोल्यूशन, कैसे खत्म होगी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ऑड इवन जो शुरू किया है इन्होंने उसका असर भी बहुत जल्दी दिखेगा. लेकिन मैं तो ऑड इवन से ही कुछ होने वाला नहीं है. लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा कि मैं चाहूंगा कि असर तो नहीं दिख रहा है ना ज़ीशान जी. हमने अभी डेटा बताया और मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बताया आपको डेटा. एक सोर्स से नहीं, डिफरेंट सोर्सेज से बताया कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ऑड इवन से. मैं भी यही कह रहा हूँ कि इतना कोई फर्क ना पड़े. लेकिन देखिए, हर तरफ से सब तरफ से 360 डिग्री के लिए कोशिश करने की जरूरत है. 360 डिग्री में बीजेपी कहाँ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है इसमें. 360 डिग्री काम अगर हम करें कि हर तरफ से सारी कोशिशें की जाएं. और सबसे खास बात यह है कि मैं वास्तव में एक सवाल भी करना चाहूंगा कि क्या आपके पास कोई सुझाव है जो आप यहाँ दे सकती हैं कि ये करे आम आदमी पार्टी, खासतौर से दिल्ली में, और ताकि पॉल्यूशन जल्द से जल्द कम हो सके और मानक के अनुरूप आ जाए? तो ऐसे कुछ सुझाव आप दीजिए. अगर वो न माने का है तो आप फिर जिम्मेदारी मतलब करके चीता बोल दीजिए के साथ भी काम नहीं हो रहा है. सारी चीजें हो रही है, सब किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आगे शंकर भी हुए, सब चीजें शुरू कर दी गई है. तो क्या मैं बार बार वही बात कहूंगा कि बीजेपी कुछ सुझाव लेके आ सकती है, साथ में मिलकर बैठ के कह सकती है. तो ऐसी दुश्मनी तो है नहीं कि साहब मुख्यमंत्री और खासतौर से सेंट्रल मिनिस्टर को छोड़िए ना ज़ीशान जी, बीजेपी को अपना काम करने दीजिए. आप दिल्ली में तो काम करिए. आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तो काम करे. बीजेपी, कांग्रेस, सबको जाने दीजिए. आप अपना काम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. खैर, बिफोर आई कम टू यू बासरी स्वराज फॉर अ रिस्पॉन्स, आई वुड लाइक टू गेट इन Sanjay Upadhaya into this discussion. He's been waiting patiently hearing all of us. Sanjay ji, you're somebody who I believe supports the odd even scheme. What makes you favor this scheme? No, I don't think that's a correct perception.
I've been fighting the NGT matters for over 5 or 6 years. And in fact, odd and even is, Okay. and as rightly said by the Supreme Court today as well, is merely an optics. So I don't really support odd and even. In fact, there were more suggestions in the Supreme Court Okay. today. Okay. But what is important is there was a very important observation made today regarding farm subsidy and its linkage with parali burning. And I think these are the crucial issues. If you really get into and sort of pierce the wheel, you will get the real answers there as to how we are using subsidy and how have we extended the sowing time of paddy, and which itself is the real problem in the last 5 or 6 years, especially after the new law, which is the Punjab Preservation of Subsoil Water Act came into being in 2005, and then later the consequence of that. But more importantly, we need to take very hard decisions. I mean, nobody's talking about the scrapping policy today and its implementation. Nobody is talking about the capping policy, which the NGT has been saying since 2015. Nobody's talking about removal of road encroachment, which is actually causing the real idling problems and the congestion on the road. Nobody's talking about aligning the signals on traffic alignments. There are at least 23 to 24 very concrete suggestions by the National Green Tribunal over a period of 5 to 6 years. And nothing has been looked at seriously. And I think those are the crucial issues. And unless we do that, we are still going to have this annual jamboree, and we are still going to have, people suffering, including you, Shreya, and which is so unfortunate. And I think unless we take these hard decisions, we are going to do the blame game that happened just now, and we are not going to get the solutions in place. And I think it's high time. And I think this MSP is a very important point, because unless you put a deterrent, nothing is going to work properly. And I will draw a parallel. Today, if you look at forest fires, there are absolute AI-based mechanisms which actually pinpoints where the forest fire is and how do you deal with it. We can transplant the same idea with stubble burning and monitor. The real issue is, how do you monitor? How do you really put a disincentive to control stubble burning? And these are the more serious issues than odd and even optics. I'm sorry. And I think that's where we need to put our minds together. Be it any government, it doesn't matter really. Basuri, talking of MSP, talking of the kind of measures that at least the central government can take, do we see that happening in the near future, now that, you and I, all of us sitting right here, are suffering the toxic air of Delhi? Can we expect some sort of measures coming in from the central government as well? Leave behind the politics, leave behind whatever has been happening between the Delhi government and the central government, but really, something that the central government can look at now at least? Is that a query to me or to? Basuri. That's to Basuri. Basuri, are you able to hear me? Yeah, sorry, you are audible now. Yeah, so the center has always been very, very serious about this particular issue. But Shreya, you know what Mr. Upadhaya was talking about, ensuring that farm fires do not happen. There is a lack of political will on part of the Aam Aadmi Party government in Punjab. And I say this with some sense of responsibility. We've all seen that clip which is being circulated on social media, where a government officer went to dissuade farmers from stubble burning, and the locals congregated and forced him to actually light the fire himself. Now, this shows a very apathetic state of affairs for the law and order itself. And then there is a lack of political will on part of the Aam Aadmi Party government to even do anything about Parali, which is so disheartening, because the Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal, he himself had taken a guarantee in front of the media in November 2022, saying that we know that Delhi is getting polluted because of stubble burning, and if we get elected,
in government in Punjab, then it will be our responsibility. It will not be the farmers' responsibility. It will be our responsibility that Parali would not be burned. I want to ask Mr. Heather, is this just rhetoric to come into power? What happened to that guarantee? Why is there a U-turn today? It's been 8 years of governance in Delhi, almost 1.5 years of governance of the Aam Aadmi Party in Punjab. Today, the Aam Aadmi Party is in power both in Punjab and in Delhi, but there's an absolute lack of political will. Mr. Kejriwal held a meeting yesterday on pollution. The only solution that he came up with was this non-visionary, absolutely inefficient, ineffective, odd and even scheme, which, as we have said, is nothing but a gimmick. जीशान हैदर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एक साल पहले 3 नवंबर 2022, मुझे डेट भी याद है, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला था कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम हम खत्म कर देंगे और दिल्ली को क्लीन एयर देंगे। बाकी जी, मैंने सुझाव मांगे थे, आपने फिर क्लेम शुरू कर दी और फिर से यही कहना शुरू कर दिया। क्या हरियाणा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब जो है सिर्फ आप यही घुमा फिरा के केजरीवाल, आम आदमी की सरकार, पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि किसकी सरकारें कितनी ज्यादा है, पूरे ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी चल रही है। आपके यशस्वी और तेजस्वी को क्या आप लोग लगाते हैं? हमारे भी प्रधानमंत्री है, वो हर चीज में मतलब उनके पास बीजेपी जैसे बताती है कि हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, क्या कड़ी हम घुमाते हैं, कर देते हैं और कहाँ से कहाँ हम देश को पहुंचा दिए। एक दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में आपसे हमने सुझाव मांगे और आप हमें 4-5 सुझाव भी नेशनल पैनल पर बैठ कर नहीं दे सकी। और हरियाणा की कोई बात ही नहीं कर रही है आप, पराली तो वहाँ भी बहुत चल रही है, सब कर रही है। मैंने सबसे पहले शुरू में कह दिया था कि इस चीज पर मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और मैं यही कहूंगा कि जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए। अब इतना निष्पक्ष तरीके से मैं आज नहीं, जब से पॉल्यूशन की बात हो रही है मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप हैं वहाँ बैठकर मुस्कुरा रही हैं और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के और उसके बाद बहुत अच्छे से मतलब जो है हरियाणा सरकार की बात करें, सेंट्रल की बात करें, मोदी जी की बात करें। मैं आपको सुझाव भी देती हूँ और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। आपने कहा कि क्या मैं हरियाणा की बात करूंगी? बिल्कुल करूंगी। इनफैक्ट शायद आपने सुना नहीं, मैंने तो अपनी बात हरियाणा के बारे में बात करके ही शुरू करी थी। 7 नवंबर 2023 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि जब पराली जलने के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें 65% जो है वो टोटल पंजाब को जाता है। पंजाब में वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हरियाणा में यदि आप देखें केवल 5% हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये सैटेलाइट इमेजिंग पे है। दूसरी बात मैं इसमें ये भी कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का स्वयं ये बयान है मीडिया में कि सबसे ज्यादा, ये बात अलग है कि उन्होंने तब ये बयान तब दिया था जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने तब ये कहा था कि केवल नॉर्थ कर्नाटका में कुछ इंसिडेंट्स हैं जहां पर फार्म फायर्स होते हैं, ज्यादातर पंजाब में होते हैं। इसलिए उन्होंने गारंटी ली थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पराली के इस विषय पे वो जरूर कुछ करेंगे। रही बात सुझाव की, आपने कहा कि क्या मैं कुछ सुझाव दूंगी? बिल्कुल दूंगी। 2 सुझाव तो मैं आपको यहीं बैठे बैठे देती हूँ। आप लोगों ने कहा था कि एक पराली से डील करने के लिए एक बायो डिकम्पोजर केमिकल आप लोगों ने उपलब्ध करा है। उस उपलब्धि के लिए आपने 68 लाख रुपीस लगाए थे उसको प्रोक्योर करने के लिए, और आपने उसका प्रचार प्रसार भी खूब अच्छे से करा था। आप जानते हैं कि उस केमिकल को विज्ञापन में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 23 करोड़ रुपए लगाए। सो 68 लाख रुपीस फॉर प्रोक्योरमेंट, 23 करोड़ रुपीस फॉर एडवर्टाइजमेंट। जब ऐसे आंकड़े होंगे, इतने अवाक करने वाले आंकड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि ऐसी योजना विफल होगी। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि वो जो आपने डीकम्पोजर उपलब्ध कराया है उसको कृपया थोड़ी और संजीदगी से उसकी तरफ लगिए, उस योजना में जुटिए और कृपया प्रचार प्रसार कम करके वो 23 करोड़ रुपया बजाय प्रचार प्रसार के उस डीकम्पोजर में लगाइए। दूसरा, 3,333 करोड़ रुपए सरकार, केंद्र सरकार ने आवंटित करे हैं 30 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर के बाकी स्टेट्स को। कृपया उसको थोड़ा और संजीदगी से लीजिए।
तीसरा मेरा और सुझाव है, मैंने यहां तक बोला कि एक सोशल मीडिया पे क्लिप आ रही है जहां पे दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही एक अफसर, गवर्नमेंट के अफसर पंजाब में गए हैं पराली से निषेध करने के लिए, लोगों को निषेध करने के लिए कि कृपया आप पराली ना जलाएं। लेकिन वहां पर लोग एकत्रित होते हैं और उसी अफसर से, गवर्नमेंट अफसर से ही आग लगवाते हैं। ये जो इतनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की जो बनी हुई है पंजाब में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पराली के लिए आपने जो इतने बड़े बड़े दावे करे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि पराली से कोयला बनेगा, पराली को हम बेचेंगे, पराली से हम आप उसकी चिंता मत करिए, हम डिकम्पोजर केमिकल डालेंगे। इन तीनों सुझावों में जो आपके नेता ने दिए थे, मेरा सुझाव होगा कि उन पर अमल करिए और कृपया दोषारोपण की राजनीति मत करिए। Okay. Before I wrap this discussion up, let me get in a last word from Gufran Beig. Gufran ji, you heard everybody, but tell us what is the way forward? What can be done on ground? Something that is implementable, something that can be smoothly, conveniently implemented on ground and will see concrete results. से अभी आजकल 2 नवंबर से अभी तक में 30 to 45% कंट्रीब्यूशन जो है पराली का आ रहा है. So that is the fact which is the suffer model has tried to find. I have been telling right from beginning that the kind of a steps with CAQM has taken and many other constituents, state government all taken. If this is extended to a airshed region, then you will have a significant impact. Because at this stage of time, surrounding area also contributing a lot. For example, the Parali is about 40%, so what is left out is 60% inside. And then when you go away from the Delhi border, you will see all the rampant biofuel emissions are there. So my only take is that the kind of measures which we have been taking in Delhi, whoever is taking, but taking that need to be extended to airshed region, which is around 100 to 150 kilometer in a periphery of Delhi. If that is done, you will have a significant impact. Otherwise, 1 or 2% here and there, 3-4%. You know, there are other countries that have implemented the odd even scheme, whether it's Beijing, whether it's France or Mexico City. They have implemented it and they've got substantial results. Why is it that we are not able to get those results? Is it because we've got a long list of exemptions when it comes to the implementation of the scheme? There are two things. One is a long list of exemption, that is number one. And number second, again, the kind of a vehicle in which we are implementing odd even, they contribute almost negligible. So, as I told, that if all the cars are banned, then only you will be targeting 7 to 8%. And now you are telling 50% of that and lot of exemptions. So 2 to 3%, which is more than that, is a fluctuation due to weather. So you won't have any kind of a almost negligible impact. And then in the Western countries, it was successful because there are very negligible two-wheelers, there are negligible other vehicles, and wherever that is done, 50% means all kind of vehicles where it has happened. So 90% are the cars over there. So it has a substantial, but we do not have these many cars. We have a two-wheelers maximum. So hardly how much would be the car total from the total? 30 to 40% maybe. Okay, we leave it there. But of course, the fact of the matter remains that we all continue to suffer. Sanjay Upadhyay, I'm afraid I have paucity of time. I'll have to wrap this up. But clearly, aside from the blame game, I think we all will agree that Delhi's air needs to be cleaned up and we need to rise above politics if it comes to our health, and not just our health, but our children's health as well, which is deteriorating every second as we breathe this toxic air. Thank you very much to all my panelists, Basuri Swaraj, Zishan Haider, Gufran Beig and Sanjay Upadhyay. Thank you very much for joining us tonight and sharing your thoughts on Delhi's toxic air emergency. With that, we're slipping into a short break. News and updates will continue on the other side. Stay tuned to Mirror Now.